us start. As I have explained many times, data warehousing, in this figure you can see, data warehousing is nothing but we are collecting data from various sources. So here you can see this data source 1, then data source 2, data source 3. These are various data sources. We are going to integrate this data. Okay, so by performing all the steps of data pre-processing, we are going to clean the data. Okay, we are going to basically pre-process the data, and after pre-processing we are going to perform this ETL process on that data: extract, transform and load. Okay, and after this process that data will go into data warehouse. So when we integrate data from multiple resources and make it compatible with each other, okay, so basically we have to transform the data. Whatever data we are collecting from various sources, we cannot directly merge one with other. We have to transform that data into compatible format, and then we can merge. Okay, then we can load. So first you have to extract the data, then you have to transform the data, and then you can load that data into data warehouse. Okay, so this huge data where you are, जैसे कोई भी जैसे रिटेल स्टोर का एक वेयर हाउस होता है जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स प्रोडक्ट स्टोर होते हैं, जस्ट लाइक दैट वी हैव अ डेटा वेयर हाउस। ओके, जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ होता है। ठीक है, और जैसे ही हमें लगता है वी गो एंड कलेक्ट दैट डेटा, जस्ट लाइक दैट वी आर स्टोरिंग डेटा, हिस्टोरिकल डेटा इन डेटा वेयर हाउस, और जैसे ही हमें कुछ उस पर एनालिसिस करना है, एट दैट टाइम वी fetch that data and we perform various types of processing, various type of analysis on that data। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा वेयर हाउस का। ठीक है, सो व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग? डेटा वेयर हाउसिंग इज basically process of collecting and managing large amount of data from different sources in a single central location, which is called as data warehouse। Okay, so क्या है data warehousing? It is a process of collecting and managing large amount of data from different sources in a single central location। So this is the definition of data warehousing। This data is clean, integrated, transformed into consistent format। So this entire process we have studied in the third unit, right? Data clean कैसे होता है, integrate कैसे होता है, transform कैसे होता है, ये पूरा process हमने third unit में study किया है। ठीक है, so that data undergone the data pre-processing to bring it into consistent format and making it easier to analyze and used for decision making। ठीक है, यूनिट का नाम है हमारा डेटा वेयर हाउसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम उसका मतलब समझते हैं कि व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग एंड व्हाट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग का मतलब समझ में आया? यस मैम। Okay. Now next we'll try to understand the basic concept of online analytical processing। ठीक है, so what is online analytical processing, or it is called as OLAP, OLAP। So when we store our data into data warehouse, we can transform that data into OLAP queue। Okay, there are various methods that we'll study in this unit, but the data from data warehouse is fetched or extracted into OLAP queue, and then we perform various queries on that OLAP queue to get data in various format, and this part is called as ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो जो डेटा
हिस्टोरिकल डेटा जो हमारे पास ह्यूज अमाउंट में डेटा हमने स्टोर करके रखा है डेटा वेयर हाउस में, उसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट में फेच करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं टू फॉर्म अ डेटा क्यूब. And on this data cube we are going to perform various analytical queries to get the information. Okay, so ये जो इस साइड वाला पार्ट है डेटा वेयर हाउस के बाद, दिस इज कॉल्ड एज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस. So this OLAP stands for Online Analytical Processing, is a technology used to quickly analyze and explore data stored in data warehouse. ठीक है, तो जो डेटा हमने स्टोर करके रखा है वो हमने क्यों स्टोर किया है? बिकॉज वी वांट टू परफॉर्म सम एनालिसिस on that data, we want to explore that data. Okay, and the process of exploring or analyzing that data is called as OLAP. Okay, it allows users to interactively examine, manipulate large amount of data from different perspectives to uncover insights and make better decisions. ठीक है, तो जो डेटा हमने डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया है उसको हम क्या करने वाले अभी इन OLAP we are going to use that data, we are going to analyze that data, and the process is called as OLAP. ओके, जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर करते हैं in the form of tables, right? And then we try to fetch that data by using SQL queries. Just like that, in data warehouse, we have a large amount of data which is stored. और जब भी आपको एनालिसिस करना है by using various techniques, we have various queries for OLAP, and by performing those queries, we are trying to fetch that data in different perspectives. Okay, this is called as OLAP. Basic आइडिया क्लियर है ओलैप का? व्हाट इज ओलैप? Yes, ma'am. Clear. Okay, fine. Now we will see some features of data warehousing. Okay, when we store data in data warehouse, the data warehouse has various features, or you can say these four are the characteristics of data warehouse: subject oriented, integrated, time variant, and non volatile. So the first characteristic here is subject oriented. So what is subject oriented? Whatever data you will store in data warehouse, it will mainly focus on areas like customers, products, sales rather than daily operations. मतलब जो डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं रिलेशनल डेटा टाइप जैसे, वो डेटा हमें डेली ऑपरेशंस के लिए यूज आता है. ओके, बट जो वेयर हाउस में हम डेटा स्टोर करते हैं दैट इज नॉट यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशन. ओके, इट इज यूज्ड फॉर सम एनालिसिस पर्पस. गेटिंग इट? मतलब जैसे अगर हमारे पास एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर में कौन सा डेटा होता है विच इज रनिंग ऑन डेली बेसिस, राइट? और इसी स्टोर का हमारे पास एक वेयर हाउस है या गोडाउन बोलते हैं हम उसको. इट इज अ बिग देन स्टोर where we keep all the materials which we may need in future, right? ऐसे नहीं है कि कोई कस्टमर आया तो एवरी टाइम यू विल गो इनटू वेयर हाउस एंड यू विल ब्रिंग दैट आइटम. गेटिंग इट? डेली ऑपरेशन के लिए वेयर हाउसेस नहीं होते. वेयर हाउसेस कब होते हैं? जब आपके स्टोर का डेटा खत्म होता है तो आप वेयर हाउस में जाके सॉरी स्टोर के आइटम्स खत्म होते तो आप वेयर हाउस में जाके वो लेके आते हो. ठीक है, तो डेली ऑपरेशन के लिए तो यू हैव स्टोर. सो वैसे ही डेली ऑपरेशन के लिए यू कैन हैव वेरियस डेटाबेसेस लाइक RDBMS. एंड जो हिस्टोरिकल डेटा है जो आप रेयरली यूज करते हो या फिर ह्यूज अमाउंट में स्टोर करके फिर आपको उस पर एनालिसिस करना है, सो फॉर दैट यू हैव डेटा वेयर हाउस. गॉट इट? Yes, ma'am. So this that is why in data warehouse it will focus on मेजर एरियाज. जो मेजर एंटिटीज होते हैं आपके डेटा के
वो हम डायरेक्टली उसमें स्टोर करते हैं डेटा वेयर हाउस में, जैसे कस्टमर से, प्रोडक्ट से, सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है। डेली जो ट्रांजैक्शन है वो हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर नहीं करते हैं। जो मेजर डेटा होता है, यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ रिटेल स्टोर। ठीक है, तो कोई एक रिटेल स्टोर है हमारे पास, तो उसके जो डेली ट्रांजैक्शन होंगे वो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और जो हिस्टोरिक डेटा है, जो आपके प्रोडक्ट्स है, जो आपके कस्टमर है, सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है, ठीक है, तो इस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे डेटा वेयर हाउस में। सो दिस हेल्प्स प्रोवाइड अ क्लियर व्यू ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर डिसीजन मेकर्स। ओके, then second characteristic of data warehousing is it is integrated. Okay, so as we have seen, warehouse is made up of the data which is collected from various sources. Okay, so this feature specifies that property, that is data warehouses are integrated. They combine data from various sources such as databases, transaction records, ensuring consistency in data mining, structure and measurement. Okay, so before storing all that data into data warehouse, that data is converted, it is transformed, right? It undergo the data pre-processing step to ensure consistency of that data. Okay, so as it is, हम data collect करके data warehouse में store नहीं करते हैं, ठीक है? That data in well structured format and it is consistent, it is accurate. सो इंश्योरिंग कंसिस्टेंसीज इन डेटा नेमिंग, मतलब जो भी हमने प्री प्रोसेसिंग में देखा है स्टेप्स, टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसीज, टू अवॉइड इनएक्यूरेसीज इन द डेटा, वो सारा प्रोसेस परफॉर्म करके ही हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ठीक है? सो इट इज इंटीग्रेटेड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दैट इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड. So integrating means not only collecting and as it is we are storing. Integrating means we are collecting and then we are transforming. And after transformation, we are storing that data into data warehouse. That is why the word is integrated. The next feature of data warehousing is time variant. So it stores historical data. So as we have seen, डेटा वेयर हाउस में हम डेली ऑपरेशन का डेटा स्टोर नहीं करते हैं. वी यूज data warehouses to store historical data, typically covering many years to provide a long term perspective. Okay, every data entry include a time element. So every data entry in data warehouse will have a time element, the time at which it has stored. Got it? बिकॉज दैट डेटा वेयर हाउस स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा, तो कौन सा डेटा आपने कब स्टोर किया है वो भी पता चलना चाहिए. तो हर एक एंट्री के लिए डेटा वेयर हाउस में एक टाइम कंस्टेंट होता है और टाइम एलिमेंट होता है. तो एक पर्टिकुलर एंट्री कौन सी टाइम पे स्टोर की है हमने डेटा वेयर हाउस में, फॉर दैट वी स्टोर टाइम एलिमेंट विथ ईच एंड एवरी एंट्री. ओके, गॉट इट? एंड देन नेक्स्ट इज नॉन वोलाटाइल. So this data which we store in data warehouse is completely stored separate from the data which is in daily operation. मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो आपके रिलेशनल डेटाबेस में आपने डेटा स्टोर करके रखा है, which is used in day to day operations, day to day transaction, that data is completely separate from data warehouse. There is no connection between this RDBMS or the data which we are using on daily basis with the data which is stored in data warehouse. There is no any connection, they are totally different. Okay, and why we are keeping it different? To keep our data safe. Okay, because the data which we store in data warehouse, it doesn't change frequently. We use that data for analysis purpose, so we are not going to change that data. So that is the reason we keep that data separately from daily operational systems and we don't change that data frequently. So basically this involves two main processes. When
when we transfer data from our relational data or daily operation data to data warehouse, it involves two processes: initial data loading and data access. Okay, these two processes are involved when we store data in data warehouse. और जो भी डेटा स्टोर है उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है? ओनली डेटा एक्सेस. पहले तो लोड होगा डेटा एंड उसके बाद वी विल एक्सेस दैट डेटा. ओनली these two operations are performed. Okay, and the data which is in daily operational, on that data we are frequently performing various operation. जैसे हम रीड करेंगे, उसमें हम क्रिएट भी करेंगे, उसमें हम अपडेट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं. ठीक है, सो these operations are performed on frequent basis on the data which is daily operational. But on data warehouse there are frequency of operation is very low. Very rarely we perform the operations. Okay, so that is why the data is non volatile. Got it? Feature समझ में आ गए? Yes, ma'am. Good. Okay, now next we'll see the difference between OLTP and OLAP. तो यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया RDBMS, this is nothing but the OLTP, and this डेटा वेयर हाउस के ऊपर जो भी प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज OLAP. ओके, सो नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वील अंडरस्टैंड इन डिटेल द डिफरेंस बिटवीन OLTP एंड OLAP. ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया OLTP हम किसको बोलते हैं और OLAP क्या होता है? व्हाट इज OLTP? Online analysis process. OLTP, I'm asking. This OLTP is online transactional processing, राइट? ये कौन से डेटा पे होता है? जो डेली ऑपरेशनल डेटा होता है, जो हम लेट से हमारा जो रिटेल स्टोर है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे, ट्रांजैक्शन जहाँ पे स्टोर करेंगे उस डेटा से हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फेच करेंगे. ये क्या हो गया? डेली ऑपरेशनल डेटा. ठीक है, और Okay, ma'am. और एक एक साल के बाद लेट से या एवरी मंथ वी आर कीपिंग समरी ऑफ ऑल आर ट्रांजैक्शन. तो वो जो समरी है वो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में, राइट? तो वेयर हाउस में क्या होगा? मंथली समरी होगी, फिर ईयरली समरी होगी, फिर क्वार्टरली समरी होगी, उसके बाद आफ्टर every year you are keeping summary, after every 5 years you are keeping summary. Such data we are going to store in data warehouse. लेकिन जो डेली डेली ऑपरेशनल डेटा है वो उसमें क्या है? डेली ट्रांजैक्शंस है. ठीक है, तो जो डेली ऑपरेशनल डेटा है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज OLTP, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. और जो डेटा वेयर हाउस होता है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज OLAP, दैट इज ऑनलाइन Yes, एनालिटिकल प्रोसेस. yes, ma'am. Clear. ठीक है. Okay, so now we are going to see difference between OLTP and OLAP. These are the systems. OLTP is a system and OLAP is a system. So see here, the first difference is users and system orientation. Okay, now आप मुझे बताओ कि ये जो OLTP है ये कौन परफॉर्म करेगा? OLTP कौन परफॉर्म कर सकता है? OLTP किसके यूज में आएगा ज्यादातर? यस, पहले तो आप ये समझ लो कि हमारे पास दो टाइप का डेटा है. ठीक है, एक तो है डेली ऑपरेशनल डेटा विच इज इन स्टोर. ठीक है, और दूसरा डेटा है हमारे पास डेटा वेयर हाउस का डेटा. ठीक है, नाउ ये जो स्टोर में जो डेटा है हमारे पास विच इज डेली ऑपरेशनल, ये कौन यूज करने वाला है? फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स यूज करेंगे. ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक डीमार्ट का एग्जांपल लो. ठीक है, दिस इज द
डेटा एक सिस्टम है डीमार्ट का बिलिंग सिस्टम, राइट। जैसे ही आप कुछ परचेज करते हो तो आप वहाँ पे डीमार्ट पे जो बिलिंग काउंटर होते हैं वहां जाके बिल करते हो, राइट और रॉन्ग? यस, ये पहले तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ये अगर आपको समझ में आया तो ही इसके आगे के आपको समझ में आएंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड। ओके, तो हमने क्या कंसिडर किया? डीमार्ट है, डीमार्ट में बिलिंग काउंटर्स होते हैं, राइट। डीमार्ट तो आपने यस देखा मैम। होगा ना, डीमार्ट पता है ना आपको? यस, डीमार्ट पता है या नहीं है? बिकॉज कंटिन्यूसली आई एम टेकिंग डीमार्ट एग्जांपल, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको डीमार्ट पता है या नहीं पता। डीमार्ट्स पता है आपको? यस और नो, कुछ तो बताओ। यस मैम। यस, व्हाट इज डीमार्ट? क्या होता है एक डीमार्ट? शॉप एक शॉपिंग कैंपस होता है मैम, जिसमें हाँ, एक अलग अलग वैरायटी के सारे। एक हाँ। शॉपिंग स्टोर है जहाँ पे यस। जाके हम शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रोसरी या अदर आइटम्स, राइट। तो उसका प्रोसेस कैसा है? यू विल गो टू डीमार्ट, you will purchase some items, right? Then you will go to billing counter, right? You will show all your purchased items, and that person who is at billing counter will make a bill, right? So as soon as QR code of your item is scanned, automatically its price come on the screen, right? तो ये जो प्राइस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम डेटाबेस, राइट। डेटाबेस में हर एक प्रोडक्ट के साथ उसका प्राइस स्टोर किया हुआ रहता है। गॉट इट? यस। तो वो जो यस मैम। डीमार्ट का बिलिंग सिस्टम है उसमें कुछ डेटाबेस है, वो कुछ डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस फेच कर रहा है, राइट। उसका स्टॉक भी हम चेक कर सकते हैं वहां से। तो वो एक डेटाबेस है, राइट, जिससे प्राइस, स्टॉक एक्सेट्रा वो फेच करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टोर का सिस्टम जो डेटा एक्सेस करता है, दैट इज व्हाट? डेली ऑपरेशनल डेटा। Okay, why we call it as a daily operational data? Because it is frequently getting accessed। वो जो डेटा है वो डेली यूज हो रहा है, एक दिन में बहुत बार, थाउजेंड्स ऑफ टाइम यूज हो रहा है, राइट। जैसे ही आप बिल करते हो तो एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, वो ट्रांजैक्शन भी उस डेटाबेस में स्टोर होता है, राइट। जैसे ही अगर आपने कोई आइटम रिटर्न कर दिया तो उसमें स्टॉक में अपडेट होता है। तो इट इज द सेम डेटाबेस इन विच, फ्रॉम विच यू आर गेटिंग prices of the product, from which you are getting stock for any product. It is the same database in which your transaction is getting stored, and the same database in which stock is getting updated, right? तो ये जो स्टोर का डेटा है या स्टोर जो डेटा एक्सेस कर रहा है, दैट इज व्हाट? डेली ऑपरेशनल डेटा। ये समझ में आया? दिस इज वन टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर डीलिंग विथ, ठीक है। ये जो स्टोर का डेटा है ये हुआ वन टाइप। इसमें कुछ डाउट है? नो मैम। नो। ओके, अभी जैसे ही ऐसे ही कंटिन्यूअसली डेली ऑपरेशन चलते रहेंगे स्टोर में, ठीक है। नाउ 1 मंथ हैज कंप्लीटेड। अभी जो 1 मंथ का डेटा है उसका आपको बैकअप लेना है, ठीक है। बैकअप या वो उस डेटा की समरी आपको कहीं और स्टोर करके रखनी है, बिकॉज जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं यू कैन नॉट स्टोर एंटायर डेटा एट वन प्लेस, बिकॉज एवरी टाइम जब आप फेच करोगे तो फिर प्रोसेसिंग बढ़ेगा, फिर आपका सिस्टम स्लो होगा। तो जो भी ट्रांजेक्शन हो गए वो डेटा आप ट्रांसफर करके रख सकते हो, राइट। तो उसका जो समरी है वो हम कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे? डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। तो 1 मंथ का समरी आपने जैसे स्टोर किया डेटा वेयर हाउस में, देन यू completed second month, you stored that summary, you completed third month, likewise you go on storing that summary of each month in the data warehouse, ठीक है।
और ये डेटा वेयर हाउस में हम मंथ वाइज समरी स्टोर कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली समरी स्टोर करते हैं। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो ईयरली समरी हम उसमें स्टोर करेंगे। लाइकवाइज वी गो ऑन स्टोरिंग इन डेटा वेयर हाउस, राइट। अभी ये जो डेटा वेयर हाउस है ये कब यूज होगा? जैसे अगर कोई कस्टमर आया, उसने एक ट्रांजैक्शन किया, तो ये डेटा वेयर हाउस का डेटा यूज होने वाला है या डेली ऑपरेशनल वाला डेटा यूज होने वाला है? यस बताओ। डेली ऑपरेशनल में डेली डाटा ऑपरेशनल यूज होगा। डेटा, राइट। यस। जितने भी ट्रांजैक्शन आपके स्टोर में होंगे ऑन डेली बेसिस, उसके लिए डेली ऑपरेशनल डेटा यूज होगा, राइट। लेकिन आपको अगर आप आपके शॉप का, आपके स्टोर का रिपोर्ट निकालना है, ठीक है, कि एक साल में कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ, राइट, या क्वार्टरली किसी एक ब्रांच में कितना सेल हुआ, वो अगर निकालना है तो कौन सा डेटाबेस यूज होगा? मैम वेयर हाउस का डाटा। इसमें क्या यूज होगा? वेयर हाउस का डेटा यूज होगा, राइट। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस है। एक तो है डेली ऑपरेशनल डेटा और दूसरा ऐसा डेटा है जो हमने वेयर हाउस में स्टोर करके रखा है, जिसपे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा माइनिंग का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे अप्लाई करते हैं? हम डेटा वेयर हाउस के डेटा पे। यस मैम। हाँ, तो जो सिस्टम्स डेली ऑपरेशनल डेटा पे वर्क करते हैं उनको हम कहते हैं OLTP सिस्टम, और ओके जो मैम। सिस्टम्स वेयर हाउस के डेटा पे वर्क करते हैं उनको कहते हैं हम OLAP सिस्टम्स। अभी क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर। हाँ, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यूजर्स एंड सिस्टम ओरिएंटेशन। अभी आप मुझे बताओ कि ये जो डेली ऑपरेशनल डेटा है, इस पे कौन वर्क करने वाला है, इसको कौन एक्सेस करने वाला है, कौन कौन यूजर्स हो सकते हैं कि जो ये डेली ऑपरेशनल डेटा को यूज करेंगे? मैम कस्टमर और जो कस्टमर, देन जो मॉल बिलिंग के एम्प्लॉय बिलिंग वो। काउंटर पे, हाँ, जो मॉल के एम्प्लॉय है बिलिंग काउंटर पे, वो एम्प्लॉयज यूज करेंगे, राइट। और ये जो डेटा वेयर हाउस में स्टोर जो डेटा है, इसको कौन यूज करेगा? इसको यूज करेंगे डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। राइट, यस मैम। राइट। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट, कि जो OLTP सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं कस्टमर ओरिएंटेड, यूज्ड बाय क्लर्क्स, क्लाइंट्स, IT प्रोफेशनल्स फॉर transaction and query processing. Okay, and now these OLAP systems are market oriented, used by managers, executives, analysts for data analysis and decision making. समझ में आया फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन OLTP सिस्टम एंड OLAP सिस्टम? ये फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। Okay. Now, second difference between OLTP and OLAP is data contents. Okay. So, content wise, if you see the data, it manages current detailed data suitable for daily operations. Whereas जो warehouse में data होता है, जो OLAP system का डेटा होता है, वो कैसा होता है? हिस्टोरिक डेटा, उसमें समरी होता है, एग्रीगेशन होता है, एंड दैट डेटा इज स्टोर्ड एट वेरियस लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है, दैट डेटा इज स्टोर्ड एट वेरियस लेवल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस in data contents of OLTP and OLAP. Okay, now नेक्स्ट पॉइंट हियर इज डेटाबेस डिजाइन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेली ऑपरेशनल डेटा होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ RDBMS, सो इट यूजेस ER मॉडल, whereas for OLAP datasets there are various models like star, snowflake model, subject oriented design। ओके, तो ये जो मॉडल्स है ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस में जैसे रिलेशनल डेटाबेस में आपको डेटा स्टोर करना है तो एक मॉडल है दैट इज ER मॉडल, जिसमें एंटिटी और रिलेशनशिप्स होते हैं। वैसे ही अगर आपको डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर करना है तो उसके भी कुछ मॉडल्स होते हैं,
ठीक है, जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे लेकिन हम इस यूनिट में वो पढ़ेंगे. तो name of those models are star model, snowflake model, then there is a galaxy model. Okay, so this model will study. Then next point of differentiation is view. So this OLTP systems focuses on current data within an enterprise or department, whereas OLAP system focuses on multiple database schema versions, integrates information from different organizations, and it handles large volume of data. Okay, so OLTP handles small volumes of data, whereas OLAP handles large volume of data. Okay, and then last point of difference is access patterns. So this involves short atomic transactions. It requires concurrency control, recovery mechanisms because this data is getting accessed frequently. तो कभी कभी ड्यूरिंग ऑपरेशन दैट डेटा में लॉस, concurrency may get lost. Okay, so you have to take care of all these factors while dealing with this data which is daily operational, which is frequently accessed, whereas these OLAP जो ऑपरेशंस होते हैं वो प्राइमरीली रीड ओनली होते हैं बिकॉज वहाँ पे हमने हिस्टोरिक डेटा स्टोर करके रखा है तो हम वहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं. We just fetch that data from various perspectives and we analyze the data. So the operations are read only with complex queries and which deal mostly with historical data. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, fine. Now we'll see data warehouse architecture. Okay, so how the data is stored in data warehouse. So this is the architecture of data warehouse. Okay, so this is 3 tier architecture. Okay, इसमें 3 tiers होते हैं data warehouse के architecture में. Just a second. मैम, Yes. क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लास आज 7 से 8 है मैम. तो आपने बताया क्यों नहीं, फिर मुझे भी नहीं बताया, मैम को भी नहीं बताया कि 7:30 तक हमारा क्लास है. सॉरी मैम, एक्चुअली कंफर्म नहीं था कि मैम वो प्रॉपर क्लास 7 बजे हुआ. उन्होंने अभी मैसेज किया है कि क्लास है 7 से 8. नहीं, फिर मैम को आप बोल दो कि 7:30 तक हमारा डेटा माइनिंग का क्लास है, तो उसके बाद मैम कंटिन्यू कर लेंगे. ओके मैम. ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं रुकती हूँ 2 मिनट. हाँ मैम, मैसेज ड्रॉप हो गया, मैम ने भी बोल दिया. ओके मैम. ठीक है, कर रहे हम शुरू. यस मैम. Okay, so this is data warehouse architecture. Okay, so it is multi-tiered or 3-tiered architecture, you can see here. So in this 3 tier, the first or the bottom tier is warehouse database server. Okay, so this server perform all the transformation tasks on collected data. Okay, so I will divide this architecture into 3 so that you will understand it. We have data sources, then staging area, and just a second. This is how the warehouse architecture is divided into 3. This is the bottom tier, you can say, or the bottom tier where we have a warehouse data warehouse server.
Then we have this middle tier. मिडल टीयर में होते हैं OLAP सर्वर्स एंड दिस इज द टॉप टीयर. टॉप टीयर में क्या होते हैं? फ्रंट एंड टूल्स. ठीक है, ये आप याद रखना या फिर नोट डाउन कर लो क्योंकि यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में वो इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, so this is the first, you can say this is the bottom tier. Whatever data will collect from various sources, this warehouse server will process that data and it will integrate the data. Okay, then we have middle tier. middle tier में क्या होते हैं? OLAP servers. OLAP system के servers होते हैं जो अलग अलग perspective से इस data को फेच करेंगे. जैसे कोई रिटेल स्टोर का डेटा है तो मैंने एक क्यूब बनाया, डेटा क्यूब बनाया परचेज के डेटा का, सेकंड डेटा क्यूब मैंने बनाया सेल्स के डेटा का, थर्ड डेटा क्यूब मैंने बनाया इन्वेंट्री के डेटा का. सो लाइकवाइज OLAP सर्वर विल एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम various perspectives. Okay, and then this top tier is the front end tools where we are visualizing the data in various format. Okay, तो ये जो टॉप टीयर है यहाँ पे हम एनालिसिस शो करते हैं. तो दैट एनालिसिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स like histograms, pie charts, it can be in the form of graphs. Okay, तो चार्ट मतलब ऐसे जो चार्ट होते हैं and graph means this line graphs. Okay, and it can be in the form of reports. Okay, जैसे एक्सेल में रिपोर्ट हो सकता है. So these are the three tiers of data warehouse architecture. Okay, now we are going to see them in detail. So first component of data warehouse architecture is external sources. So these are the sources from where we are going to collect the data. So here type of data, structure of data doesn't matter. Whatever sources we have, we are going to collect that data from every sources. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डी मार्ट का एग्जाम्पल लिया तो वी आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ डी मार्ट. ओके, नो मैटर कि सारे ब्रांचेस में सेम फॉर्मेट में डेटा स्टोर है या अलग अलग फॉर्मेट में डेटा स्टोर है. सबसे पहला काम हमारा क्या है? टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम all the sources, all the external sources. Okay, so this external source is the source from where data is collected irrespective of type of data. Data can be structured, it can be semi structured, it can be unstructured. In any format we are going to collect the data. Okay, then second component of data warehouse architecture is stage area. So the data which we have extracted from external resources will not follow a particular format, right? There, that data cannot be in the uniform format. So there is a need to validate the data, because after validating, after transforming that data, we are going to load that data into data warehouse. Okay, so in stage area we can use ETL tool. ETL means extract, transform and load. Okay, so ये ETL tool क्या करता है? सबसे पहले तो एक डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्म करता है इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड देन दैट डेटा इज गेटिंग लोडेड इनटू डेटा वेयरहाउस. Okay, after transformation the data will be loaded. ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? No, ma'am. Okay, so in one word we can say this is data collection. Okay, and this is the second component is doing data transformation. Okay, then third is data warehouse. So after cleansing of data, the data is stored in data warehouse as a central repository. Okay, so this data warehouse is a central repository of your data. So from all the resources you are going to store data at central location. That is why it is called as central repository.
So it actually stores the metadata and the actual data gets stored in the data marts. Okay, तो data warehouse में हम एक्चुअली मेटा डेटा स्टोर करते हैं. डेटा वेयर हाउस का ही एक कंपोनेंट है डेटा मार्ट. तो डेटा मार्ट में हम एक्चुअल डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है, डेटा वेयर हाउस में हम मेटा डेटा स्टोर करते हैं और डेटा मार्ट में एक्चुअल डेटा स्टोर होता है. ठीक है, so data warehouses store the data in its purest forms as it is. जो प्योर फॉर्म में डेटा है that we are going to store in data warehouse. उसके बाद जो हम उस पर कुछ प्रोसेस अप्लाई करके या अलग अलग पर्सपेक्टिव से डेटा स्टोर करेंगे that is called as data mart. Okay, so data mart is also part of storage component. That means data mart is a part of data warehouse. And what it stores information of a particular function of an organization which is handled by single authority. ठीक है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में. ये क्या है, दिस इज डेटा वेयर हाउस. इसमें हमने एज इट इज पूरा डेटा स्टोर करके रखा है, लेकिन परचेज के लिए हमारे पास एक अलग पर्सन होगा हु इज हैंडलिंग और हु इज वर्किंग ऑन परचेज डेटा. सेल्स के डेटा के लिए एक अलग पर्सन होगा हु इज हैंडलिंग सेल्स डेटा. इन्वेंट्री के लिए अलग होगा. तो ये जो है डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है वो हम अलग 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 मार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये जो है डेटा मार्ट्स, ये है परचेज का मार्ट, देन सेल्स मार्ट, इन्वेंट्री मार्ट. ओके, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से जब हम डेटा फेच करते हैं, डेटा क्यूब में स्टोर करते हैं, इट इज कॉल्ड एज डेटा मार्ट. ठीक है, डेटा मार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया. डेटा हाउस वेयर हाउस में जो रॉ डेटा है उसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स कैटेगरी वी आर ग्रुपिंग दैट डेटा इनटू वेरियस डेटा मार्ट्स. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक. यस मैम. So data mart is a subset of data warehouse. उसका ही वो पार्ट है, उसका ही सबसेट है. And then fifth is data mining. So the practice of analyzing the big data present in data warehouse is data mining. Okay, तो जो भी डेटा मार्ट में हमने डेटा लिया है अभी, उसके ऊपर हम डेटा माइनिंग करेंगे. So we can apply various algorithms of data mining on data marts. So this approach is defined by this Inmon as data warehouse as a central repository for complete organization, and data mart are created from it after complete data warehouse has been created. मतलब एक बार आपका complete data warehouse create हो गया, उसके बाद by using data in that data warehouse you are going to create multiple data marts. ओके, और वो जो डेटा मार्ट में जो डेटा है उसके ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करोगे एंड देन यू कैन विजुअलाइज दैट डेटा इन वेरियस फॉर्म्स. ठीक है, तो ये हुआ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर में कुछ डाउट है? नो मैम. So we have seen 3-tier architecture of data warehouse. Okay, 3-tier architecture में हमने ये 5 components देखे हैं architecture. Okay, now we are going to understand the concept of data cube. Okay, data cube का concept मैंने first unit में आपको समझाया था. Now here in this unit we are going to see this data cube in very much detail. Okay, so this data cube is used to store multi-dimensional data. तो जो data warehouse होता है उसमें से हम जो data mart है, data mart is nothing but the data cube. Okay, so this data cube is multi-dimensional data model of data warehouse. So data cube allows data to be modeled and viewed in multiple dimensions, and it is defined by dimensions and facts. Okay, तो एक example हम देखेंगे.
डेटा क्यूब के लिए. So we'll understand this data cube with this example. तो यहाँ पे आप देखो, you can see the data in the form of data cube, right? तो ये आप समझ सकते हो, ये आप रिलेट कर सकते हो जो डेटाबेस में हमारे पास टेबल होते हैं उससे. So in our database, relational database, we have table. In one table, we have rows and columns, right? Just like that, this is the data cube, okay? And every cell will represent a certain value, okay? So for example, consider a retail business and that wants to analyze its sales data. तो ये जो cube है ये है sales का cube. So the business may create data cube with dimensions such as year or month, then product and city or country. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो we have formed this data cube. तो data cube में यहाँ पे क्या है, एक तो टाइम का डायमेंशन है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ओके. देन वी हैव प्रोडक्ट नेम्स, राइट. तो ये जो है टीवी, पीसी, वीसीआर, ये क्या है, these are the product names on one dimension. Then this country is on third dimension, okay. So this is a three dimensional data cube. We have three dimension, which are those: product, date and country. These are called as dimensions, okay. So in data cube, data is represented using dimensions and facts, okay. तो dimension समझ में आया. Dimensions are nothing but the entities. So here product, date, country, these are the dimensions of this data. And now whatever value we will have for each cell, so that value is nothing but the fact, okay. So dimensions are the perspectives or entity with respect to which an organization want the data. एंड फैक्ट्स आर न्यूमेरिक मेजर्स. तो हर एक सेल में जो भी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर डायमेंशन की, उसको कहते हैं हम फैक्ट्स, ठीक है. तो ये डेटा क्यूब में जो डेटा होता है वो कैसा होता है, एग्रीगेटेड डेटा. इट प्रोवाइड्स यू टू वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन मल्टीपल डायमेंशंस. तो अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, जैसे टाइम, लोकेशन, प्रोडक्ट, ओके. सो दिस डेटा क्यूब बेसिकली अलाउ यूजर टू व्यू द डेटा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. तो इस डेटा क्यूब में आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये जो फोर्थ वाला कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पे या यहाँ पे, दिस इज व्हाट, सम. इसका हम सम ये फोर्थ कॉलम में रिप्रेजेंट, फोर्थ डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. So the cube would contain pre-aggregated data such as total sales, average sales, number of units sold for each combination of dimension. And this would allow business to quickly analyze sales data by year, product and city. जो भी आपने dimensions लिए हैं, that dimension wise you can visualize the data. आ रहा है समझ में? यस मैम. तो अगर लेट से मैं इस सेल में कुछ वैल्यू देती हूँ, ये सेल्स का डेटा है, लेट से 20. तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में टीवी का सेल कितना हुआ था, 20 यूनिट्स. गेटिंग इट? यस मैम. वैसे ही अगर इसमें मैं लिखती हूँ 100, तो फर्स्ट क्वार्टर में पीसी का नेपाल में, आई थिंक दिस इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दिस इज इंडिया ओनली, आई थिंक. हाँ, नेपाल कब आएगा, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो नेपाल आएगा. तो दिस इज फॉर इंडिया. सो फर्स्ट क्वार्टर में पीसी का इंडिया में सेल कितना हुआ था, 100 यूनिट, ओके. वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ तो सेकेंड क्वार्टर में नेपाल में
किसी प्रोडक्ट का सेल, ये हर एक सेल एक मल्टीपल डायमेंशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। गेटिंग इट? यस मैम। So this is how we represent the data in data warehouse from different perspectives. Okay, तो ऐसे डेटा क्यूब्स हम बना के रखते हैं with aggregate data, and then we apply some visualization techniques on it to visualize the data. Okay, so this is the concept of data cube. Data cube में कुछ डाउट है? नो मैम। Okay, so we will stop for today. Let's continue in the next lecture. Just wait for a minute, मुझे screenshot लेने दो. Okay, thank you.